everyone, so we are back with the new QCAT topic of the year, that is 2022. So our today's topic is talk about a natural talent that you want to improve, such as music or sports. So again, we have got many comments or many of the requests that we must make a video on that. So yes, we are here. So I'm going to tell you that what all things you can add into it. Okay. So I would like to start by saying that there are many natural talents that I do have, but if I talk about one of them that I really want to improve is sports. As far as I remember that, so when I was in my second standard, that time one day I was running into a match and my father noticed one thing, that my running speed is actually very good as compared to other students. So that time he thought of putting me into sports, and in my third, fourth and fifth standard I got many rewards about it. Not only this, but my father really wanted me to go in an international sports, so he chose a rifle shooting game and he putted me into that. As far as I can recall, so it was in my 8th standard when I joined this game, and initially I found it a hard nut to crack, but after some recommendations or a lot of practice, it became a piece of cake for me. Actually, this game is all about concentration as well as physical fitness, and since that day I started taking a different kind of diet, and which helps me a lot to improve my stamina. I really want to improve this, and that's why I'm planning to go to Delhi, because in Delhi we have an international shooting range and they have a lot of good qualified trainers as well as coaches. So I requested my father that I really want to improve this, because many of the people say that if I can improve this, I can make a good career, even I can earn name and fame. With the help of that, I can become a millionaire as well, because in the terms of rifle shooting, government gives a lot of huge amount of rewards, whether it is international level or national level. And fortunately I have won many prizes at state level, and now I'm planning to improve a little and I want to gain more and more prizes and rewards. So yes, this is the natural talent that I want to improve, and I will be taking classes for the same. सो गाइज सी कैसे हमने इस टॉपिक को स्पीक किया. आप इसमें म्यूज़िक के बारे में बोल सकते हो कि स्टार्टिंग में मुझे पता चला कि यस मेरी आवाज़ काफ़ी अच्छी है. काफ़ी लोग मुझे एक्चुअल में कॉम्प्लीमेंट करते थे कि मेरी आवाज़ काफ़ी अच्छी है, और मैंने अब क्या किया, मैंने 2-3 गाने गाए और उनको यूट्यूब पे पब्लिश किया और मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला. तो मैंने सोचा कि क्यों ना मुझे इस टैलेंट को इम्प्रूव कर लेना चाहिए, और मैं अब दिल्ली, नोएडा, बेंगलोर कहीं पे भी जा रहा हूँ या जा रही हूँ इस चीज़ की क्लासेस लेने के लिए, बिकॉज़ वहाँ पे वेल ट्रेंड और वेल क्वालिफाइड ट्रेनर्स आपको मिलेंगे, कोच आपको मिलेंगे, राइट. सो अगर आपको म्यूज़िक के बारे में बोलना है, आप म्यूज़िक के बारे में भी बोल सकते हो. अगर आपको स्पोर्ट्स के बारे में बोलना है, आप स्पोर्ट्स के बारे में भी बोल सकते हो. अब आपने नोटिस किया होगा कि आज मैंने 2 नए ईडियम्स यूज़ करे. एक है हार्ड नट टू क्रैक और एक है पीस ऑफ केक. हार्ड नट टू क्रैक होता है डिफ़िकल्ट टास्क. जैसे बोला कि इनिशियली शुरुआत में इट वॉज़ अ हार्ड नट टू क्रैक फॉर मी, ये मेरे लिए एक डिफ़िकल्ट टास्क था. बट आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद कोचिंग लेने के बाद और प्रैक्टिस करने के बाद, इट बिकेम अ पीस ऑफ केक. ये मेरे लिए एक ईजी टास्क बन गया. पीस ऑफ केक होता है ईजी टास्क, राइट. सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अगर आपको पूरे क्यू कार्ड में से कोई भी वोकैबुलरी या फिर कोई भी वर्ड का मीनिंग नहीं समझ में आया, कोई सेंटेंस भी नहीं समझ में आया, देन प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए ताकि मैं आपका रिप्लाई कर सकूँ. और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ डू इट इफ़ यू वांट टू गेट द लेटेस्ट अपडेट. थैंक यू.